Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज PDF नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आउ ता उपरे बेस्ड करी गोटे प्रॉब्लम आउ तार सॉल्यूशन देखिबा सो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सपोज फॉर एन एग्जांपल जदि हमें रिजल्टेंट बाहर करिबा ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन then we may consider the equivalent matrices which are suppose P and Q such that B equal to QAP. Okay, so here P and Q are two non-singular matrices. Now if Q equal to P inverse ताहले आमे या को रिप्लेस करिबा Q जगह रे P inverse पुट करिबा ओके सो B ही गला यार वैल्यू P inverse AP. Now this transformation of matrix A okay into the new matrix B मन रखो एटी A होची हमर ओरिजिनल मैट्रिक्स B हला जोटा की ट्रांसफॉर्मेशन हला okay so the transformation of the original matrix A into B is known as the similarity transformation and the matrices A and B are said to be similar matrices right so from equation 2 we may rewrite like P inverse to be equal to या को यदि हमें सॉल्व करबा को we will get finally the matrix A. Here we have applied P inverse to be equal to the identity or unit matrix. Okay, so A रो value हमें पाउछु P inverse. This is also a similarity transformation. Okay, a matrix equation retains its form under a similarity transformation. Okay, suppose for example we consider the matrix equation AB equal to C. Then we have P inverse ABP या को जदि हमें सॉल्व करिबा आकु देन फाइनली तुम अराइव करिबो देखो एठी समान फॉर्मेट रे आसी गला P inverse AP P inverse BP P inverse CP that means A dash B dash equal to C dash okay so यार फॉर्मेट टा सेम रहिला where A dash B dash and C dash represents the matrices which are related to the corresponding matrices A, B, C by similarity transformation through P. Okay, and obviously from equation 5 we will have the same format as in equation 4. Okay, a remark here that if the matrix P of similarity transformation happens to be unitary then it is called a unitary transformation. And if further P is a real orthogonal matrix then it will be called as an orthogonal transformation. Okay, that means B equal to P inverse AP ताले unitary transformation रे P inverse will be equal to P dagger आउ in case of orthogonal transformation P inverse will be equal to P transpose. Okay, so let us see a theorem here based on the similarity transformation. It states that the trace of a matrix remains invariant under similarity transformation. Let us prove it. That means we have first है similarity transformation हमें नहीं गला गोटे matrix रो B equal to P inverse AP. Okay, ताले trace we know that the sum of the diagonal elements. So trace B which is equal to summation I B I or trace of P inverse AP. Okay, summation लगेगा. Now since as I said trace of the matrix is the sum of its diagonal terms ताले याकू देखो summation I summation j k ए हिसाब रे लिखिला P I j inverse A j k P k I. ओके एबे याकू हमें उल्टे दबा इंटरचेंज कर दबा ओके आउ ई समेशन को भी तीनटा फॉर I j k ए हिसाब रे भांगी देला ओके सो फर्दर
आम जदि देखा पी पी इनवर्स एटी हो जाऊँगी आ समान सिंबल आम एटी पाचु के जे रो ओके सो फाइनाली देख पुणी एटा जो समान सिंबल आसला केतेबेले जेतेबेले के जे जो समान सिंबलटा आसला माने समेशन जे को आम एटी एक्चुअली रिप्लेस करुचु ओके सिमिलरली समेशन आई को पुणी रिप्लेस करवा सो दैट एठी आसीगला पी पी इनवर्स ए यार सबस्क्रिप्ट आसछि देख के ओके खाली समेशन ओवर के रोची दैट मीन्स एठी ए भितर जो क्वांटिटा आम पाउछु दिस इज नथिंग बट a k k which is also the trace of a okay that means the trace of b equal to trace of a hence proved tapare let us solve a problem based on the similarity transformation eti pocharuchi find a similarity transformation that diagonalizes the matrix a which is given by minus 2 2 minus 3 2 1 minus 6 minus 1 minus 2 0 okay so characteristic equation of this matrix याकू जदि बाहर करवा a minus lambda I determinant जदि काढ़िबा हैला then it will be equal to 0 ओके एटा आइजेन वैल्यू बाहर कला बेल को तुम देखिबो सो a minus lambda I प्रथमे बाहर करा जाऊ and from which we will solve the characteristic equation so that lambda by our eigen value तीनटा पाउछु हमें 5 minus 3 minus 3 okay so eigen value equation is a minus lambda I x equal to 0 and here if we put the value of lambda to be equal to 5 then it becomes like this okay एठी x को हमें x1 x2 x3 ए हिसाब रे लिखुछु okay now using the operation r13 माने एठी रो 1 और 3 को हमें इंटरचेंज कर देला राइट फर्दर we apply r2 plus 2r1 okay so it is the this is r2 plus 2r1 similarly this is r3 minus 7r1 okay in this way we solve for the values of actually x1 x2 x3 so ये जो equation हमें पाउछु if we take x3 equal to 1 we will get x2 equal to minus 2 then x1 equal to minus 1 so for the eigenvector for lambda equal to 5 is minus 1 minus 2 1 similarly for lambda equal to minus 3 remember it a degeneracy अछि lambda equal to minus 3 दुई थर आछि so eigenvalue equation similar way रे हमें further solve करिबा now if we take एटी दुईटा वैल्यू नबा if we take x3 equal to 0 ताले x1 equal to minus 2x2 and if we take x2 equal to minus 1 ताले x1 रो वैल्यू हेगला 2 so गोटे आइजेन वेक्टर तो हमें पाइगला 2 minus 1 0 further if we take x3 equal to 1 ताले x2 equal to 0 x1 equal to 3 so eigen vector 3 0 1 thus we have three eigen vectors corresponding to lambda equal to 5 minus 3 and minus 3 which are minus 1 minus 2 1 2 minus 1 0 3 0 1 okay now we take these independent eigenvectors as three column vectors the required matrix transformation equation now एटा को आम लिखि परिबा p हला this much okay तीनटा column vector रे आम या को लिखि देला right similarly p inverse okay एटा inverse बाहर करिबो then we go for p inverse ap the similarity transformation okay so एठी matrix multiplication करिवार अछि किछि नै and finally you will arrive at the result देखिबो एटा diagonalize हे छि 5 0 0 0 minus 3 0 and 0 0 minus 3 okay so this is all about the similarity transformation. Thank you.